लाइनअप बहुत लगी है। 6 बजे शाम को लोग वॉक इन के लिए लाइनअप लगा लेते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ऑफिस खुलना होता है, ये जितने भी लाइनअप में है ये विदाउट अपॉइंटमेंट्स है। Don't get carried away by rumors. Don't get carried away by what the other person is doing. Don't have to line up overnight in this weather, especially in this weather. The issue is between government and government, that is the side, but people are suffering. Do not panic and keep a check on the appointment page, on the appointment portal on BLS website. जो पोर्टल है अपॉइंटमेंट्स का, उसका क्या सिचुएशन है? क्योंकि अगर आज किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है BLS की, अपने पासपोर्ट रिन्यूअल की या OCI की, सो क्या अक्टूबर की अपॉइंटमेंट्स मिल रही है कि ऑल बुक, और नवंबर की क्यों नहीं ओपन हुई? इमरजेंसी है, दैट्स अ डेथ केस बेसिकली, हॉस्पिटलाइजेशन। हाँ, उस केस में वो ईमेल करें। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ BLS ਦੇ ਆਫਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ OCI ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੰਦ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਲੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਦ ਓਪਨ ਹੋਗੇ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ पेश हो रही हैं, लाइनअप लग रही है। BLS ਦੀ अपॉइंटमेंट्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ अपॉइंटमेंट्स ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ अपॉइंटमेंट्स ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਡ ਹੈ। ਓਪਨ ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਨਅਪ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BLS ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਰੀਜਨਲ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वेलकम टू प्राइम एशिया फर्स्ट ऑफ ऑल। Hello, afternoon to you. Good, thank you. So अनिर्बान जी, अगर आप हमें बताएं कि द इशू ऑफ वीजाज नहीं मिल रहे और लाइनअप बहुत है, इसके ऊपर व्हाट यू विल से टू द पीपल कम्युनिटी, दोज हु आर लिसनिंग टू यू? First and foremost, what I would advise is not to listen to rumors. Yes, visa for whatever technical reason is not being issued now, or not, the application is not being taken now, for which, but then people can apply for OCI. And for OCI, it's very important to note that the process is, first one has to surrender the Indian passport, submit the application for the surrender of Indian passport. Once that certificate that document come, then only one can apply for OCI. So if you want to apply for your OCI, ensure that your passport has been surrendered. If not, surrender your passport first and continue with the process. Consulate is trying their best to do as fast possible to process these applications. They are trying, their best, and we are all there to assist. Okay, आरुषि जी, आप अगर बताएंगे कि लाइनअप बहुत लगी है, 6 बजे शाम को लोग वॉक इन के लिए लाइनअप लगा लेते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ऑफिस खुलना होता है, सो इट्स अ बिग क्यू। कैसे इतनी सर्दी में लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या आपके पास कहने के लिए इसके ऊपर? आई वुड से एक्चुअली देयर इज़ नो नीड इतना क्यू लगाने के लिए रात से ही। आई थिंक लोग एक दूसरे को देखकर पैनिक कर रहे हैं कि वो रात को 10 बजे आया तो अच्छा मुझे 8 बजे आना है, मुझे 7 बजे आना है, तो ये वाला टाइम पीरियड ना एक्सटेंड होता जा रहा है। तो अभी क्या है, वो शाम से ही लगने लग गए हैं। सुबह 7-8 बजे हमारा ऑफिस खुलता है। अगर आधे घंटा 1 घंटा पहले भी आप लाइन अप करेंगे, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। आप एक दूसरे का सुन के कि पैनिक हो रहा है कि ऑलरेडी लाइन अप हो रहा है, अगर ये सब के सब ये चीज़ बंद कर दें तो आई थिंक सारे ही मॉर्निंग में ही लाइन अप करेंगे। ओके, ऑफिस खुलता है 8 बजे, ऑफिस खुलता है 8 बजे, तो आप कहते हैं सुबह 6-7 बजे आके आप लाइन अप में लगे। 7 o'clock is good enough. लेकिन लोगों का कंसर्न ये होगा कि हमें ये जितने भी लाइनअप में है ये विदाउट अपॉइंटमेंट्स है, सो उनको कैसे वॉक इन में नंबर आ जाएगा? यहाँ पे अगर बाहर 50-60 अभी बंदे तक खड़े जो हमारा चल रहा है उसमें हम अपॉइंटमेंट्स भी ले रहे हैं। जो राइट साइड में क्यू है वो अपॉइंटमेंट्स की है। देयर इज नो क्यू फॉर अपॉइंटमेंट्स बिकॉज हम अपॉइंटमेंट्स को राइट अवे लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। एंड लेफ्ट साइड की जो क्यू है वो पूरी हमारी वॉक इन की है। और जो मैं देख रही हूँ अभी तक बाय 1:30 एंड समटाइम्स वी आर इवन स्ट्रेचिंग इट टू 2 o'clock कि हम जितने भी वॉक इन्स हैं हम उनको अकोमोडेट कर सकें। एंड जो अभी तक हमने देखा है लाइनअप पूरा खत्म हो रहा है 2 बजे तक। सो अनिर्बान जी, विल यू से दैट द लाइनअप ये नहीं लगना चाहिए? सुबह 8 बजे ऑफिस खुलता है तो उसके पहले आप आए 1-2 घंटे पहले, एंड ऑल विल बी अकोमोडेटेड जो भी लाइन में होंगे। Absolutely. Very strongly, I would want to say that please don't line up. See, as we know that all over the world, whenever there's a situation, there are some people who tries to take advantage of it. There are people who are now abusing the situation. Yes. We see it
sitting in this office that there are people who are hired by giving money to hold a queue up for the applicants overnight. It's not at all required. It is exactly as she mentioned, that don't get carried away by the rumors, don't get carried away by seeing that people are queuing up in the night. It is the job of those people to show that there is a situation, to show that there is an emergency situation, those people who commercially benefit out of this. So please don't queue up. Come by 7 o'clock, which is good enough. Largely people would get accommodated. See, even in a situation when everything was fine in the sense visa were being issued, the previous years, there is always a day that when the turnout is more. Like you see in Service Canada, Service Ontario, if there's a queue suddenly, out of whatever reason, everyone cannot get accommodated. But those are one of those days. But otherwise, everyone gets accommodated or at least assisted by us. सो अरुषि जी, जो पोर्टल है अपॉइंटमेंट्स का, उसका क्या सिचुएशन है? क्योंकि अगर आज किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है बीएलएस की, अपने पासपोर्ट रिन्यूअल की या ओसीआई की, सो क्या अक्टूबर की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं कि ऑल बुक्ड, और नवंबर की क्यों नहीं ओपन हुई? नहीं, एज ऑफ टुडे अक्टूबर इज ऑल फिल्ड अप। ओके। और हम नेक्स्ट मंथ की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ओपन करते हैं। अक्टूबर एंड में नेक्स्ट मंथ? तो अब अक्टूबर एंड में नवंबर की ओपन हो जाएंगे। सो ऑल दे हैव टू डू इज टू जस्ट कीप आई ऑन द अपॉइंटमेंट पोर्टल, एंड आफ्टर 20th we will open the appointments for November. और हम उसके बाद नवंबर में भी on weekly basis, on daily basis, हम in fact जो लोग क्यू में खड़े हैं उनको भी इन्फॉर्म करते हैं कभी कभी कि अपॉइंटमेंट्स आर ओपन। तो जस्ट कीप एन आई ऑन दैट, बट ये नहीं है कि हम मंथ की बिगनिंग में नेक्स्ट मंथ का अपॉइंटमेंट ओपन कर देंगे। ठीक है। सो इसमें and just to add to that, if she has said कि October is all full, that does not mean that the rest of the days of October people will not get appointment. As she said, that we open appointment for the month, for the week, and even for the day, during various hours of the day. Now, what time during the week or what time during the day, we will not say that, because again, there are those people who abuses the appointments. So we don't want, otherwise the purpose will get defeated. But even if the October is full, keep your eyes on the appointment page, and you will find that appointments are getting opened up. And as she was telling, wherein I interrupted, that even when people are in the queue, during that time when we open the appointment, the security personnel goes and announce that you may check the appointment page. There are appointments that have been opened up. Okay. So so these are the things that we do as much possible to accommodate the people. So still abhi appointments booked हैं सारी October की. Still people, the community, they can go and look to the page, and it may be coming up some appointments. It may be. It would be coming up on a weekly basis. Additional appointments on a daily basis. Additional appointments. It would be coming up. So ਆ ਗੱਲ ਦਸੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਅਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, वो वीजे कोई आइडिया है कब तक ओपन होंगे कि नहीं? No, we don't know that. But then, I mean, sometime of the other things, things would change or might change. But otherwise, again, I'll come back to our same thing that don't listen to rumors, don't panic without reason. We are taking applications. Submit for your OCI. Submit your passport applications. After that, submit your OCI application. Now, this is very important. See, if there's a lineup, how you clear the lineup, one depends on how you process it, and two depends on the applicants who are before you. If the applicants before you take abnormally longer time, then the next ones get affected. Now, this is largely why it's happening is large number of applicants, they are resorting to outside people to get their application filled up. Agents, jo bahar baithe hain. Yes, agents to fill up. Agents would never know, the latest updates or how to substitute a document A with a document B as much as the officers who are on a day-to-day being communicated by the consulate. So in the process, what is happening is 7 out of 10 applications of these in the queue overnight, they're coming with erroneous applications. Those are erroneous. So when it is an erroneous application, what typically happens is the counter reads first, and they had given either paid money or they have been standing in the queue for a long time. So obviously frustration will creep in.
So they would come and say, no, why would there be a complaint XYZ? Why would there be an error? Whatever that XYZ error has been pointed out, it should not be. I had got my, this filled up. It should be all correct. It goes into argument. Then it goes into the correction. Then they understand. They say, if you could help us out on this. Then we try to, help them out, correcting their forms, sometimes doing their entire forms. So naturally it gets delayed, the other applicants. Yeah. So this whole cycle is a vicious cycle. Don't expose yourself or your applications to these agents. So आपका कहना है कि when जैसे BLS हमारे is पास here, काउंटर पर एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं, ऐसे टिक करके चेक करके आई हुई हैं और वो ठीक है। हमसे आकर बोलते हैं कि हमने एजेंट से कराई है, हमने वहाँ जो भी so किया agents है। को अपने confidential document देना safe है? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सुना है कि वो क्यू में भी कोई आता है और हेल्प करता है और ऐसे बोलता है कि हम एक्स BLS एम्प्लॉय हैं, तो वो उनसे चेक करवा रहे हैं ओवरनाइट एप्लीकेशंस। फिर जब वो काउंटर पे आते हैं, वी नो द बेस्ट कि किस फील्ड में क्या भरना है, तो वो सब बाहर से पहले ही मत करवाएं। उससे क्या हो रहा है कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पेड समथिंग टू देम। तो हम दोबारा से चेक करते हैं और फिर हम वी आर डूइंग ऑल द असिस्टेंस एट द सेंटर, ऑल द एनीथिंग रिलेटेड टू द फॉर्म ऑल्सो वी आर हेल्पिंग एज मच एज पॉसिबल। ओके, सो OCI एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में कितना टाइम, क्योंकि लोगों ने अपनी टिकट्स बुक कराई हुई हैं, कितना टाइम प्रोसेसिंग में लग रहा है अप्रोक्सीमेट? गिवन द OCI लोड what consulate is getting right now, I think they are doing their best right now. Processing time OCI का जो actually 8 to 10 weeks है, वो मैं भी देख रही हूँ कि within 1 month consulate is processing OCI. Okay, they are doing fast process. Yes, since visas are suspended, that's why they are doing very, very good. Okay. I mean, the consulate is working, I think almost, 7 days a week, the officers are working, they're clearing all these huge backlogs. They're trying their best to assist. They're trying their best to clear Yes, those applications. Yes. Emergency केस में कोई डेथ का केस है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन का केस है, कुछ और केस है, उस केस में अगर किसी ने इंडिया जाना है, वीजा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? So अभी जो फर्स्ट ऑप्शन है, that is only OCI, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन इंडिया जाने के लिए, तो OCI ही अप्लाई करें। ठीक है। अगर इसके अलावा 1 हफ्ता 2 हफ्ता में या कोई इमरजेंसी है, तो the only thing they can do is they can email to visa.toronto and they can mention their emergency there, that the reason for the means for the जो visa. emergency है, that's a death case basically, hospitalization कोई serious है, उस केस में वो email करें और कॉन्सुलेट ही उनको ईमेल आप बताएंगे हमें कौन सा? हाँ, ईमेल है visa.toronto@mea.gov.in। ठीक है। कोई भी दसिए कि ਜਿਹੜਾ emergency case ਚ ਜਿਹੜਾ email display ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ email ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, consulate will look into that as per the documents ਕਿਹੜੀ emergency ਹੈ, visa issue ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। What message you want to give to the viewers who are watching that, because this is becoming an issue, right? The lineups, the inconvenience, because we know that BLS is doing their best, and the issue is between government and government, that is the side, but people are suffering. So being a BLS head, what you will say to the community? Would say only one thing, that again, which I'm repeating, that don't get carried away by rumors. Don't get carried away by what the other person is doing. Don't have to line up overnight in this weather, especially in this weather. Just be maybe an hour before the office opens, which is at 8 o'clock, before an hour before. And don't get your applications filled up by people who are not the officers of the BLS. They would never know the correct way of filling it up. You would end up paying money. You would end up again doing the whole thing, by yourself. Of course, at BLS, we are there to assist you. A to Z, we are there to assist you. And we have all the logistics within our center to assist you. But only thing is that please don't get carried away and don't get panicky for no reason. ठीक है। So आरुषि जी, क्या बाकी जो सर्विसेज ओपन है, पासपोर्ट रिन्यूअल, पुलिस क्लियरेंस, these are open? उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए? जो है ओपन है, अपॉइंटमेंट चाहिए, सेम लाइक OCI, और आप वॉक इन में भी आ सकते हैं। एंड सरेंडर इज एट 60 गिलिंगम इन ब्रैम्पटन एंड OCI इज एट 40 गिलिंगम। ठीक है। सो अपॉइंटमेंट वाले आ सकते हैं, जो वॉक इन है उनको यही रिक्वेस्ट है सारी कि वो रात को शाम को लाइनें मत लगाएं, वो सुबह आए। Do not panic and keep a check on the appointments, ठीक है, which will open at the end of this month for November. So your final message to the community? Yeah, I would just say the same thing. Do not panic and keep a check on the appointment page, on the appointment portal on BLS website after the 20th of this month. ठीक है। And as BLS, we got your back.
we are there to assist you from A to Z. If you're confused, because there are so many that with a rush, they just coming with a bunch of documents, we can understand. So we can have those organized. We can have you assisted. So don't panic. Yes. We got your back. That's it. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, Right. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆ ਸੀਗੇ BLS ਦੇ ਹੈਡ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨਅਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨਅਪ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ BLS ਦਾ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਅਪ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈਨਅਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ BLS ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਹਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨਅਪ ਦਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਸ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੋਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾਈਨਅਪਸ BLS ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।